कर रहा है. So when you do this exercise of newspaper reading, you develop this skill as well, which will help you in your mains answer writing. और असली जो बैटल है वो मेंस ही है. प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है. प्रीलिम्स विल गिव यू जस्ट द एंट्री टिकट टू द मेन बैटल. ऑलराइट, इसलिए अपनी तैयारी ऐसे मत करो कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस. ऑलराइट, एंड कुछ भी टॉपिक आप पकड़ो, यू शुड नो दैट विद विच पेपर इट विल लाई and in which subtopic it will lie. All right, so the second source is monthly magazine, and then the third source will be your PPTs or the notes that I will share with you on your portal. Classes क्यों हैं? क्योंकि current affair is a thing. Every day there is a new addition to your current affair. Like if I say for your prelims 2025, इसका कैलेंडर आ गया, नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर आ चुका होगा आई गेस. कब है पेपर अगले साल? 25 ऑफ मई. ओके गाइस, कैन यू टेल मी कि कितना करंट अफेयर, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ करंट अफेयर दैट वी हैव टू कवर? एनी आइडिया, रफ आइडिया? मतलब जैसे कितना लोअर लिमिट क्या होगी? मई, तो क्या हमें अप्रैल का करंट अफेयर 25 का करना होगा? पूरे अप्रैल का? ओके, मार्च का? मार्च 25 का करना होगा? यस और नो? पेपर मार्च में बन चुका होगा, यूपीएससी आपको मैसेज करके बताएगी. गाइस, डोंट थिंक इट दिस वे. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ 15 दिन पहले का करंट अफेयर भी पेपर में आया हुआ है. सो डोंट थिंक दिस विद द परसेप्शन कि पेपर तो बन चुका होगा. बट मोर और लेस यू आर ऑल्सो करेक्ट. एटलीस्ट एक महीना पहले एग्जाम के आप करंट अफेयर छोड़ सकते हो. यानी 25 आपका मई से पहले क्या है? अप्रैल. 25 अप्रैल तक का एटलीस्ट आपको करंट अफेयर करना होगा. कहां से? व्हाट इज द हायर एंड? कब से कवर करना होगा? कौन से साल से आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा? डू यू थिंक इफ आई से जनवरी 23 से आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करो और अप्रैल 25 तक आप करंट अफेयर पढ़ो, इट इज इनफ? कैन वी प्रोसीड विद आवर क्लास नाउ? अब मैं आ जाऊं करंट अफेयर्स पर. तो लार्जली मैंने आपको बता दिया कि मैं कौन से पोर्शन करने वाला हूं, अप्रैल and May. Acha, I forgot to introduce myself. My name is Anshum Verma and I am a practicing advocate in Supreme Court and Delhi High Court. But because of my teaching as a passion, you are seeing me here. All right? And yes, I have a decent experience of UPSC as well. Don't worry. ये धक्के हमने भी खाए हैं. All right? So I have a pretty decent experience of clearing, cracking many government exams. Even I have written some mains as well, given some interviews as well, but yeah, ultimately not selected. All right, the battle is still on. So, but I have switched my line. I am practicing law as of now because of my new interest in my life. So, we are starting with first topic, international relations. Then I will discuss the topic in detail with you, and I will share this PDF with you. You will get this PDF as it is, and then from the PDF and from the class discussion we can have this thing. Then what will be my approach? Any topic that I will pick, I will help you to quote. जो मैंने अभी तक आपको कोच करा वो मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा. जैसे मैंने IR शुरू कर रहा हूं, IR के कौन से टॉपिक से ये टॉपिक लिंक होगा, कौन से सब टॉपिक से लिंक होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा. एंड वन मोर थिंग दैट आई डू विद माई क्लास इज दैट मैं जो भी टॉपिक आपको लार्जली पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड एक PYQ जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है
एंड अ मेंस क्वेश्चन, ये मैं आपको दूंगा, ठीक है। एंड डोंट थिंक, जब मैं आपको मेंस क्वेश्चन दूं, डोंट थिंक अभी तो हमें कुछ आता नहीं है, अभी तो हमें कुछ सीखा नहीं है, या मेंस हम लिखेंगे कैसे। बस स्टार्ट राइटिंग नाउ फ्रॉम डे वन, नो मैटर। अच्छा, देर इज नो वर्ड लिमिट फॉर यू गाइज, देर इज नो टाइम लिमिट फॉर यू गाइज, यू गाइज आर इन स्टेज 1 ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। सो ये आंसर राइटिंग भी मैं अभी से शुरू करवाऊंगा आपका, एटलीस्ट फॉर माय सब्जेक्ट करंट अफेयर्स, और पीवाईक्यूज को भी हम क्लास में ही एक दो जो भी आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी यूपीएससी ने, एक आइडिया बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी गाइस, माय फर्स्ट क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। वो याद है ना, ओशन में एक लाइन बनाई है ना, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और इन्हीं सब एक्टिविटीज से मैं सिखाना चाहता हूं आपको कि यही सब आपको इनकलकेट करना है जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, नॉट जस्ट करंट अफेयर्स। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? सो कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, India-Nepal relations. This topic was in news in the month of April and May. You can link this topic with GS2 subtopic India and its neighborhood, comma, effects of policies and politics of countries on India's interest. ये दो सब टॉपिक्स हैं आपके GS2 में, आप जब सिलेबस देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अच्छा, अभी कोई लिखो मत, मैं आपको क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए दे दूंगा, मैं अलाउ करूंगा आपको, बट अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो गाइस। सी, पिछले कुछ सालों में, स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम, देयर इज अ वेरी हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ नोट्स। क्या नोट्स मिलना आज के टाइम में डिफिकल्ट है? कंटेंट मिलना आज के टाइम में डिफिकल्ट है? ये एक टाइम पर डिफिकल्ट हुआ करता था, प्री कोविड भी था, और आज से अगर मैं 10 साल पहले कह लूं, 2010 से पहले, ये तो बहुत ही इंपॉसिबल था, लोगों को बुक्स इकट्ठी करनी पड़ती थी। आज के टाइम में गाइज, अवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स इज नॉट एन इशू, सो डू नॉट रन आफ्टर नोट्स, रन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। एक बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया नेपाल रिलेशंस मैंने आज आपको पढ़ा दिया, कुछ बेसिक्स हम पॉइंट्स यहां पर पढ़ेंगे। जब आईआर एज अ जीएस सब्जेक्ट होगा, वहां पर आप इंडिया नेपाल डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर हिस्ट्री कैसे थी, कैसे इवॉल्व हुआ रिलेशन। मैं अभी सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, बट डोंट यू थिंक 2024 में हम चल रहे हैं और हमें मार्च या अप्रैल 25 तक करंट अफेयर्स करना है? आपको नहीं लगता नेपाल के साथ कुछ ना कुछ करंट अफेयर फिर से आएगा? बट एट दैट टाइम डू यू थिंक दैट, और हो सकता है कि जब मैं रेगुलर करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए जो मैं यहां से फिर दोबारा आपके साथ डिस्कस करूं। सो एट दैट टाइम व्हेन यू विल बी डूइंग इंडिया नेपाल अगेन, इट विल बी अ रिवीजन प्लस अ लिटिल एड ऑन फॉर वट एवर न्यू करंट अफेयर दैट केम। सो एक बार एक टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, उसको अच्छे से नोट्स बनाकर उसको साइड रख दिया, ताकि अगली बार जब आप सेम टॉपिक पढ़ो उसका सिर्फ एड ऑन आपको याद करना पड़े। दिस इज हाउ यू विल डेवलप करंट अफेयर्स स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली। और तभी मैंने आपको कहा, करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में या इन 5 क्लासों में आप करंट अफेयर के चैंपियन बन जाएंगे, नहीं। यू विल लर्न दिस ग्रेजुअली आफ्टर 6-7 months ऑफ कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। 6-7 months में तो यह समझ आने लगेगा कि करंट अफेयर में पढ़ना क्या है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरी डे in current affairs syllabus is added, nothing is removed from the back, every day syllabus is added. Coming back to India Nepal, can anyone tell me India Nepal का क्या ऐसा issue न्यूज में था in the month of April? Very good. So there is a new map released by Nepal on their currency note. So they have issued a 100 rupee currency note, जहां पर उन्होंने एक नया मैप डाला। How does it affect India? They have shown
some areas which are right now held by India as their own territory. जैसे हमारे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लगभग सभी देशों के साथ कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हमारे. We have this with Pakistan, we have this with China, we have this with Sri Lanka. Very recently there was one border dispute, Kacha Kivu Island, Nepal. So can anyone tell me what is the broader region which is in issue? किसी को कुछ पता है, सुना है, याद है? From your faces I could figure out कि सुना है, नाम याद नहीं आ रहा, वो disputed territory क्या है. Don't worry, उसी के लिए मैं हूं यहां पर. So as we have just seen, Nepal has announced the printing of, like why this topic is in news, first we are understanding that. Recently, Nepal has announced the printing of new 100 rupee currency note with a map that shows contagious territories Lipu Lake, Limpu Darya and Kalapani termed as their artificial enlargement and unattainable by India. That means ये तीन इलाके जो कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में है, they are showing it in their own map. Don't you think it is a violation of Indian sovereignty? भाई हमारा प्लॉट है, तुम अपने मैप पे दिखा रहे हो. होता है ना, रिश्तेदारों के साथ भी यही होता है कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ प्लॉट, यू आर द ओनर, बट एक आपके चाचा या ताया जी दूसरे रिश्तेदार के पास जाके बोल रहे हैं वो प्लॉट तो हमारा है. इमेजिन देयर विल बी अ प्रॉब्लम एट होम. सेम. So India has responded sharply to Nepal's decision, with India's external affairs minister stating that it would not change the situation or reality on the ground. मतलब इंडिया ने भी इसको रिटेलिएट करा. अब let me show you that what are these regions. So अगर आप, if you can see and understand through this map, this is Nepal, this is India, and there is a very small tri-junction. एक छोटा सा ट्राइजंक्शन है जो ये तीन रीजन बनाता है. दिस रीजन इज कालापानी, दिस इज लिपू लेक पास, आपने बचपन में ज्योग्राफी में लिपू लेक पास जरूर सुना होगा, एंड लिम्पू दुरिया. दीज आर द थ्री रीजन. इसके अलावा एक और रीजन है जो डिस्प्यूटेड है, वो पड़ता है आपका ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल में, बिहार वाले बॉर्डर में. उस पर भी आ रहा हूं. अभी फिलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीन हिस्से है इंडिया के, बट नेपाल इज शोइंग दिस विद देम. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई. लेट अस कम टू दैट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजन्स ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. सबसे पहले वो कौन से रीजन्स है? ये तीन रीजन मैंने आपको दिखाए. एक और रीजन है सुस्ता, इस पर मैं आऊंगा, बट पहले इन तीन रीजन को समझते हैं. ये दिस रीजन, ऑल दिस ट्राइजंक्शन इज जस्ट 35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. सिर्फ 35 किलोमीटर का एरिया है इन द नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ नेपाल, नियर ट्राइजंक्शन वेयर इंडिया, नेपाल, चाइना मीट. ओके, सो इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप, दिस इज अ ट्राइजंक्शन वेयर इंडिया, नेपाल एंड चाइना मीट्स. ऑलराइट. Now Kalapani is advantageously located at the height of 20,000 feet, which serves as an observation post for this area. Like आपको भी पता है, like with China we are not having a good cordial relations. अभी चाइना के साथ भी एक और इशू न्यूज में था अप्रैल मई में, जो कि अगला ही टॉपिक है. विल डिस्कस दैट, वहां पर थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे. बट वी नो दैट देयर आर सम पॉइंट्स वेयर चाइना इज वेरी एग्रेसिव विद अस. Have you heard of Galwan clash? ठीक है, ये सब न्यूज में था. सो काला पानी अपने आप में बहुत स्ट्रेटेजिकली इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड. Whenever you are at a higher altitude, it is an advantage for you because from height you can see a good area. Then Kali River in this Kala Pani demarcates the border between India and Nepal. So when I say all our border which is with China and which is with Nepal, we see a line, like in any map you see a line, but do you know this that in reality there is no line. Like पाकिस्तान के साथ हमने एक बॉर्डर बना रखा है
largely almost 95% of the border with Pakistan is fenced. हमने डिमार्केशन कर रखा है कि भैया इस पार तुम्हारा इस पार हमारा, कुछ डिस्प्यूटेड इलाके हैं वो अलग, बट दिस कंप्लीट रीजन इज अनडिमार्केटेड. वो जो लाइंस हम शो करते हैं दैट इज आवर साइड ऑफ द मैप. इन रियलिटी देयर इज नो फिजिकल बॉर्डर दैट एग्जिस्ट. हाउएवर एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर है काली रिवर. हैव यू हर्ड ऑफ दिस काली रिवर? सो दिस काली रिवर demarcates the border with Nepal and India. So how this border was created? This border was created by a treaty of Sagoli. This treaty was signed in 1816. आज से almost 200 years back, 198 to be precise. At that time, this treaty was signed between the Kingdom of Nepal and British India during the Anglo-Nepalese War. यहां पर ये क्लियर बॉर्डर डिमार्केट करा गया था कि बियॉन्ड दिस रिवर is your territory and beyond this river is our territory. That means on the eastern portion is Nepal, on the western side there is India. So this treaty designated Kali River or Mahakali. The Kali River is known as Mahakali in Nepal. इंडिया में हम इसे काली बोलते हैं, वहां पर महाकाली बोलते हैं. एज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल, ये नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री है. लैंड ईस्ट ऑफ काली रिवर केम अंडर नेपाल्स कंट्रोल, व्हाइल द टेरिटरी ऑफ वेस्ट ऑफ द रिवर विल बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. द डिस्क्रिपेंसीज इन लोकेटिंग द सोर्स ऑफ काली रिवर लेड टू द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. नाउ व्हाट इज द मेन इशू? द मेन इशू इज, don't you think in these 200 years the river will flow with same intensity? Do you know that as a part of the natural course even the river change its course? And if I say, अगर आपको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी की नॉलेज हो, किसी भी रिवर का कोई एग्जैक्ट सोर्स होता है क्या? Like we say Ganga rises from Gangotri, Gaumukh, Gangotri glacier, Gaumukh. But if you Google Gaumukh, it is just a cave from where the water is coming. We don't even know what is the exact source inside. Like where the water is collecting, where the water is amalgamating, like meeting. So Kali River के साथ भी ऐसा ही है. The source of the Kali River, the Treaty of Sagoli does not talk about from where the border starts. It says कि भाई ये लाइन नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, बट कहां से ये लाइन शुरू हो रही है? दिस इज द डिस्प्यूट, और यहीं से फिर टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुरू होता है. सो व्हाट इज द नेपाल स्टैंड? नेपाल का क्या ओपिनियन है? अकॉर्डिंग टू नेपाल्स क्लेम, काली रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्ट्रीम इन लिम्पू दरिया विच इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ लिपू लेक. ऑलराइट. They say that Kali river originates from Limpu Darya, but technically what is the real ground? ठीक है, right now, okay, अगर Kali river originates from Limpu Darya, that means everything below Limpu Darya, Kali river will make the boundary. Yes or no? Are you getting this? So thus Kala Pani, Limpu Darya and Lipu Lake will fall east of the river and will become Nepal's Darchula district. Like the westernmost district of Nepal is Darchula. तो उनका ये कहना है, if the river originates from here, which will make all this territory as a part of Nepal. उनका ये कहना है कि रिवर यहां से ओरिजिनेट करती है, बट टेक्निकली जो सोर्स ऑफ रिवर काली है वो यहां से नहीं, लगभग यहां कहीं से है. ठीक है, वो यहां कहीं से ऐसे ट्रैवल करके उत्तराखंड में घुसती है. ठीक है, दिस इज व्हाट इंडिया स्टेट्स. ऑलराइट. असली में है भी वो लगभग काला पानी के आसपास का ही सोर्स है उसका. ऑलराइट. सो व्हाट इज द इंडियाज पॉइंट? इंडिया स्टैंड्स. अच्छा, बिफोर दिस द टेरिटरी ऑफ काला पानी was earlier with Nepal.
it was offered to India by King Mahendra in 1962 Indo-China War. ठीक है, वो किंग महेंद्रा ने 1962 में काला पानी का एक छोटा सा इलाका इंडिया को दे दिया था विद अ फॉर्मल ट्रीटी, बिकॉज he wanted to help India's security concern due to the perceived lingering Chinese threats. At that time, you know, the condition was very hostile. In 1962, we also had a war. Now, what India says? India claims that Kali River originates in a spring well below Lipu Lake Pass. India का क्या कहना है? The Kali originates from Lipu Lake. So you remember Lipu Lake? Now, when it originates from Lipu Lake, everything west of the Kali will become the part of India. That means the Kala Pani as well as the Limpu Darya, both of them will become part of India, effectively bringing Kala Pani region under India's control. So the Sagali Treaty does not demarcate the area north of these streams. It do not talk about the source, do not talk about the areas which will come north of the stream. So ये जो एम्बिगुअस रीजन है, इस वजह से और ज्यादा चीजें कंफ्यूज हो रहा है. The administrative and revenue records of 19th century also show that the Kala Pani was on Indian side and counted as a part of Pithoragarh district of Uttarakhand. We have those records as well, administrative records as well as the revenue records. हमारे पास taxation records, land demarkings, ये सब कुछ है. All right, but it is just that the Nepal is not accepting it, and hence dispute arises. Now, why do you think this dispute is in news from last 2-3 years? What is the main reason behind it? क्या सिर्फ ये टेरिटोरियल या सिर्फ मूवमेंट ऑफ रिवर ही एक रीजन है? Why do you think Nepal has become a little aggressive against India? Yes, the reason lies with influence of China. For example, guys, politics plays a huge role. So there are a group of people in Nepal, or there is a huge population in Nepal that is pro-India. However, there are some political parties which are against India. And whenever all those political parties that comes into power who are against India, they will take such similar steps. So right now Nepal is under their communist party, and their communist party is directly linked with under the influence of China. So under their influence they are doing the same. जैसे very recently, to understand this a little larger, Maldives issue, India Maldives issue. So as soon as the president changes, the policy and the international relation and the dynamics changes. However, we invited Moizu in the oath taking ceremony of Narendra Modi. We have invited everyone except China and Pakistan. Okay, so this is our initiative to take a stance. Achha, remember one more thing, in international relations, guys, there is nothing known as good relations and there is nothing known as bad relations. डिप्लोमेसी में कभी भी सब कुछ ब्रिलियंट हो ऐसा जरूरी नहीं, और बिल्कुल खराब हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं. Things will go up and down every time. Like for example, this issue is not new. This issue is a very old issue. Like India के इंडिपेंडेंस से इशू बना हुआ है, but this issue aggravated from last 2 years. Then it settled, then again it aggravated by doing this act, like issuing a currency note. All right, so this is India's stance. Then guys, there is one more region which is in dispute. Everyone will talk about these 3 dispute. Most of the current affair slides will talk about these 3 dispute, but one small dispute is one village which is known as Susta. Susta region, the Treaty of Sagali defined Gandak River as an international boundary between India and Nepal. So if you have a rough idea where Gandak flows, from the, almost on the eastern margin of Nepal. I have added a map here as well. ठीक है,
जो आपका सुस्ता है, now this is West Champaran district of Bihar, this is your Nepal, and what demarcates both of them is Gandak river. So this here is Gandak. All right. Now this small village is Susta. Okay. Now right now it is under the control of India. So Treaty of Sagoli defined Gandak river as international boundary between India and Nepal. The right bank river has under Nepal's control. So you understand right bank and left bank, river is flowing like this. So this side is Nepal, this side is India, while left bank is under India. Susta village was initially on the right bank. Earlier it was on the right bank, but in 200 years guys, every river will change its course. What happened is, now the river is flowing, it has changed its course, and Susta has come to the left bank of the river, and hence it comes under the control of India. So when the treaty was signed, it was part of Nepal. So this was one more region which is disputed. Over the years, Gandak river has changed its course and Susta has moved to left bank and now currently under India's control. So there are technically 4 regions which are under dispute: Limpu Darya, Kalapani, Lipu Lake and Susta. All 3 are on the tri-junction, one on the western margin. Then how we can resolve it? What are the solutions to it? So both the countries present their own historical documents and interpretations of the Sagoli Treaty to support their claims. A resolution remains elusive. Abhi tak we haven't agreed on a concrete resolution. So moving forward with constructive dialogue and willingness to find a common ground will be crucial to resolving this long-standing issue. Now, if you see, if anyone who have been to Nepal, if you get a chance to visit Nepal, it is just like any other town you will see in Uttarakhand, Himachal. It's similar. Almost everything that you can find in India, you will find there. Indian products, Indian apparels, dressing, culture, everything is same. But over the years of time, can anyone tell me why China also shares border with Nepal? Why not China has influenced Nepal till now? Why India, like everything is, why Indian there? Why not Chinese? They can also have free movement with China, but उनके साथ क्यों नहीं है? But then China could have used that buffer zone for their advantage like they are using it today. Why couldn't they use it earlier? Due to the presence of Himalayas. Very good. There is a geographical barrier between China and Nepal. That is our mighty Himalaya. So the Himalaya in the northern portion of Nepal stops China coming into Nepal. However, now what is happening? As technological advancements are happening, China now possesses a technology to dug tunnels through Himalaya and reaching their capital, even Kathmandu. They are planning to connect their Lhasa. Lhasa is the capital of Tibet province, with Kathmandu via train. Nepal is dependent on India for every of the products, even petrol, electricity and all these things. Don't you think more Chinese influence will not only we will lose Nepal as a market, but it is strategically at disadvantage, China sitting there in Nepal. So this is what is happening very lately. So everyone understood this India-Nepal issue? What are the key highlights? Before we note down some important points, I want you to answer this question. I will ask the answers. Just read it. It is a question from 2016. Done? How many for A? Raise your hands.
B, C. Am I going too fast? Okay, I am giving 30 seconds more. Read this question one more time and then I will, you have just to raise your hands for the option. I cannot give you OMR sheets in the class, guys. Okay, how many for A? Raise your hands. B, C, and D. Okay, some of you are no comments. Apolitical, not supporting any kind of democracy in the class. Anyways, the correct answer is C. How? Rohingyas. Who are they? The largest persecuted minority in Myanmar. Right now, international issue. Okay. Madhesis. Madhesis are the people who stays in the southern Nepal. Tarai belt. Tarai belt is that kind of geographical belt which is very marshy, जहां पर नदियां री-एमर्ज होती है पहाड़ों से. It's a marshy land. So जितना भी लोअर नेपाल है, beyond Nepal there is the plains of Uttar Pradesh, the Gangetic plains. So जो लोअर नेपाल वाला जो पोर्शन है, it is occupied by the Madhesis. आज से कुछ टाइम पहले ये कम्युनिटी फिर से न्यूज में थी. Do you know Nepal is right now struggling to form their constitution? They haven't completed their constitution. The biggest issue is brought by these Madhesis. ठीक है? So this is then Kurd. Kurds are the people. It is again a community that is found in many Middle Eastern countries. Not just in Iran, not just in Turkey. They are fighting their own battle that they want a Kurdistan. So all this area, Turkey, Syria, they have a good Kurd population. It's a community. Okay, among those Western countries, it's a community like Pashtuns, like Pathans, Shias and Sunnis are broader segregations. Within Shias and Sunnis, there are different sects, sectarian groupings. So out of them, one is Kurd. So it is found in Turkey, Iran, Iraq and those belt, Middle Eastern belt. Okay, so correct answer is C. Okay, coming to, note down some important points here. First, India-Nepal, give just a subheading. अच्छा, just note down limited portions. Okay, ताकि क्लास में कुछ sense of completeness रहे, इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ. वरना I don't even allow to write anything. And you guys are very new. I can figure it out from the faces. कई लोगों के लिए पहली बार है ये सब. Like how many of you are reading India-Nepal for the first time? Raise your hand honestly. There are good people. So कई ऐसे topics आप first time पढ़ेंगे guys. So just read down why it is in news. Nepal introduced a new currency note showing Indian territory. अच्छा, वन मोर थिंग, लिखते लिखते सुनते जाओ. जब भी यू हैव टू राइट अ आंसर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, या आपसे यूपीएससी में कोई सवाल पूछे कि क्या इंडिया सही कर रहा है गलत कर रहा है, वहां शुरू मत हो जाना ये बहुत गलत कर रहा है. यू कैनॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टांस. गाइज, आई एम नॉट सेइंग टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी. नो, बिग नो. आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है अपने आंसर्स में और अपने किसी भी तरह के जवाब में, लाइक वेदर इट इंटरव्यू और मेंस. ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यू आर एफिलिएटेड टू वन पॉलिटिकल माइंडसेट. आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज को ध्यान में रखना. अच्छा, वैसे आप कहेंगे कि इसमें मैप में है कहां? अगर ध्यान से देखोगे तो यहां इंडिया एक नेपाल का मैप है, इसके अंदर शो हुआ है. ठीक है, आप कहोगे कि सर इसमें तो कहीं दिख भी नहीं रहा कि ये तीनों रीजन. तो ये छोटे छोटे मूव्स
do not write these things, but write a new currency note. Then give a subheading, regions of dispute with Nepal. Note down these points: Limpu Darya, Kala Pani, Lipu Lake, and Susta region in west. Sir, is that the whole yellow color region is controlled by India. It is with India right now. Okay. Nepal is this much only. ये नेपाल है. Please draw a rough map if you want. ये एक ऐसा ही मैप बना लो. You understand to for a better understanding कि this transaction is चार रीजन डिस्प्यूटेड हो गए. इस मैप में 3 है. सुस्ता रीजन इज इन द वेस्टर्न साइड. डन. डन. थोड़ा सा जल्दी गाइस. You will get these PDFs, don't worry. It will be uploaded on the portal. Done? Okay. So from here we have added all these things. Just note down. Treaty of Sagoli signed between Kingdom of Nepal and British India in 1816. Designate Kali River as the boundary. सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर के लिखने हैं. That's it.
Done? Okay. Rest guys, what is Nepali stand, what is India stand, we are not writing that because both the stands will keep on changing. Just note down a little about Susta region as well. Susta region lies in the eastern portion of Nepal or western margins of Bihar. Write down Treaty of Sagoli designate Gandak river as the border between India and Nepal. Done? ठीक है, वो पूरा नहीं लिखना है, बस जस्ट अंडर ट्रीटी ऑफ सगौली गंडक रिवर डेजिग्नेट एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ठीक है, फॉर और योर रफ दिस थिंग लगभग एकदम ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल में सुस्ता पड़ता है. ठीक है, दिस इज वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार.